हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अवर शिकागो व्लॉग। तो हमारे पिछले वीडियोस में अगर आप हमारी व्लॉग सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने एक्सप्लोर किया शिकागो डाउनटाउन। हम गए 360 शिकागो, जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया टिल्ट एंड बहुत ही बढ़िया ऊपर से सिटी के व्यूज़। एंड यस, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल सिटी बीच। एंड सबकी चाइल्डहुड मेमोरी हैरी पॉटर की शॉप भी हमने एक्सप्लोर की एंड हमने डाउनटाउन के व्यूज़ चल के भी लिए। सो गाइज, अब बारी है दूसरे अट्रैक्शन में जाने की। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर शिकागो विद अस। बिफोर वी गो टू अनदर अट्रैक्शन, ये जो बीच हमें 360 शिकागो में ऊपर से दिख रहा था वो डेफिनेटली मुझे नीचे से तो देखना ही था, तो हम आ गए हैं उस बीच पे जस्ट टू गेट सम व्यूज़ एंड फ्रेश एयर। सो दूसरे अट्रैक्शन पे आए हैं 360 शिकागो के बाद, जो है आर्किटेक्चर टूर। यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं। थैंक यू। यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड करने वाले हैं क्रूज अभी। So guys, क्रूज के टूर में बैठे हैं। अच्छी सी धूप आ रही है, गर्मी थोड़ी लग रही है लेकिन धूप आ रही है। So excited, Very excited. ऑलरेडी थोड़ा व्यू जो है डाउनटाउन का यहाँ से दिख रहा है, स्काईलाइन जो है वो दिख रही है। अभी और बढ़िया व्यू आने वाला है। Everybody, my name is Jeremy and I fell in love with this town. So considering that it is a much nicer day out today, I'm hoping I can get you to fall in love with Chicago as well. And of course, if you drop something into the Chicago River, it belongs to the river now. We cannot get it back for you. This is also a no smoking or vaping vessel. If you do need to take a phone call or have a conversation, we just ask that you try to keep it down for the sake of the guests around you and for the sake of my poor voice. I'll be up here talking for about the entire 75 minutes that we're out along the Chicago River. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew.
my horse home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Caught your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. No, you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Caught your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.
सो गाइस हमने दूसरा अट्रैक्शन जो था आर्किटेक्चर रिवर क्रूज़ वो कर लिया। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है सिटी ऑफ शिकागो का। बहुत मज़ा आया देख के, सब कुछ जान के। अब हम आए हैं तीसरे अट्रैक्शन पे आज के, जो है नेवी पियर। यहाँ की भी एक्टिविटीज़ के पास है जो हम देखने वाले करे कि नहीं, क्योंकि उसके ऑप्शन में दूसरा भी है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट अभी नहीं किया है। तो नेवी पियर पार्क देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो टिकट्स को यूज़ करें तो यहाँ करेंगे, वरना कल किसी और अट्रैक्शन में उन टिकट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं द नेवी पार्क। सो गाइस आज की नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है शिकागो फ्लाईओवर, जो नेवी पियर में ही है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ वोटेड वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ हियर। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ 4D राइड जिसका स्क्रीन जो है पूरा कर्व्ड है। मुझे नहीं पता अंदर हम रिकॉर्ड कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ से आपको दिखा देते हैं। Are you excited? Yeah, very excited. Very excited? Yeah, it's a new experience. Yeah. Have you ever done anything like this 40-60 ride? Yes. Where? 40 and 16. Yeah. Niagara Falls. Oh, And yeah. I don't remember. There is one more place where I did the activity. Was that in Canada, India, Oh, in US? Canada. In Canada. Yes. It was kind of like 40, right? Yeah, it was kind of theater, but it has like mist and those kind of things. Yeah. Was I with you? I think I was once, Yes, but yes, you might have done more because मैंने I think मैंने 4 बार ऐसा किया है, and every single time I was with him. But you are in Canada for a long time, so you might have done multiple times. So, but have you experienced the curved screen? No. No. So this is gonna be the first experience. Yes. Yeah. Then yeah, it's gonna be first experience for both of us, and I'm excited. You're excited too, right? It's very exciting. So let's go. At Flyover, we believe that experiencing epic places and meeting awesome people awakens a sense of wonder and a spirit of discovery. And right now, you're at the beginning of your journey. A custom immersive experience awaits upstairs, followed by a short safety briefing, and then you'll move on.
तो गाइस ऐसा था फ्लाईओवर। अनफॉर्चुनेटली मैं रियली में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने ऑनलाइन छोटी छोटी क्लिप्स जोड़ के आपके लिए यहाँ पे लगाई थी ताकि आपको पता चले कि अंदर एक्सपीरियंस कैसा था। Guys, this was amazing. The flyover here at Navy Pier, Chicago. करना चाहिए। मेरी आँख में पानी आ गया, मुझे इतना मजा आया। And it was super, super, super thrilling. Have you experienced like this before? No, never. Definitely try it, guys. Seriously. Amazing, amazing experience. तो चलो शाम हो गई है, आज का दिन बढ़िया रहा। आर्किटेक्चर टूर किया, बहुत मज़ा आया रिवर क्रूज़ में। एंड ये नेवी पियर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, स्पेशली शिकागो फ्लाईओवर। बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, सबको करनी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी भी बाकी है, आपको शिकागो दिखाना अभी भी बाकी है गाइस। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून एंड दूसरे व्लॉग का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आ रहा है नई शिकागो एक्टिविटीज़ के साथ। सी यू गाइस, बाय बाय।